Hello friends, welcome back to YouTube channel Legends of Educational Knowledge. I am Mahesh Notyal. Today we will discuss the future perfect tense. So let's start. Identification of this tense. The sentences of this tense are end up with चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका हूँगा, etc. Helping verb. For I and we use shall have, and for another subject we use will have as the helping verb. Main verb. We use third form of the verb in this tense. Now rules for formation of the sentences. In simple sentences, first we use subject, then shall have or will have, then third form of the verb, and then object. In negative sentences, subject plus shall not have or will not have plus third form of the verb plus object. In interrogative sentences, shall or will plus subject plus have plus third form of the verb plus object and question mark. In double interrogative sentences, first we use interrogative words, then shall or will, then subject, then have, then third form of the verb, and then object, question mark. Now some examples of this tense. First example, मेहमान खाना खा चुके होंगे. Simple. The guests will have eaten the food. Negative. The guests will not have eaten the food. Interrogative. Will the guests have eaten the food? Question mark. Double interrogative. When will the guests have eaten the food? Question mark. Second example. मैं 5 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा. Simple. I shall have completed my work by 5 o'clock. Negative. I shall not have completed my work by 5 o'clock. Interrogative. Shall I have completed my work by 5 o'clock? Question mark. Double interrogative. How shall I have completed my work by 5 o'clock? Question mark. Third example.
पिताजी दफ्तर पहुंच चुके होंगे। सिंपल। फादर विल हैव रीच्ड टू ऑफिस। नेगेटिव। फादर विल नॉट हैव रीच्ड टू ऑफिस। इंटरोगेटिव। विल फादर हैव रीच्ड टू ऑफिस? क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव। With whom will father have reached to office? Question mark. Fourth example. हम कल मैच जीत चुके होंगे। Simple. We shall have won the match tomorrow. Negative. We shall not have won the match tomorrow. Interrogative. Shall we have won the match tomorrow? Question mark. Double interrogative. How shall we have won the match tomorrow? Question mark. Fifth example. नर्स रोगियों को दवा दे चुकी होगी। Simple. Nurse will have given the medicine to patients. Negative. Nurse will not have given the medicine to patients. Interrogative. Will nurse have given the medicine to patients? Question mark. Double interrogative. Where will nurse have given the medicine to patients? Question mark. Some more examples of this tense. First, मैच आरंभ होने से पूर्व हम मैदान में पहुंच जाएंगे। इस टेंस में इस तरह वाले वाक्य कुछ डबल वाक्य होते हैं। इस तरह के वाक्यों में जो काम पहले हो रहा होता है उस भाग की इंग्लिश हम शुरू में बनाते हैं और जो काम बाद में हो रहा होता है उसकी इंग्लिश हम बाद में बनाते हैं। पहले होने वाले कार्य वाले भाग में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल अप्लाई होते हैं और जो काम बाद में हो रहा होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल अप्लाई होते हैं। जैसे मैच आरंभ होने से पूर्व हम मैदान में पहुंच जाएंगे। हम मैदान में पहुंच जाएंगे के लिए we shall have reached to field, इसके बाद पूर्व की इंग्लिश बिफोर, उसके बाद मैच आरंभ होने से बिफोर द मैच स्टार्ट्स। सेकंड एग्जाम्पल, चंद्रमा के निकलने से पूर्व हम घर पहुंच चुकेंगे। We shall have reached to home before the moon rises. थर्ड एग्जाम्पल, उसके स्टेशन आने से पूर्व रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। The train will have departed before he comes to a station. फोर्थ एग्जाम्पल, सूर्य निकलने से पहले किसान खेत जोत चुकेगा। The farmer will have plowed the field before the sun rises. डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज दवाई खा चुका होगा। The patient will have taken the medicine before doctor comes. So it's enough for today.
We will meet in the next video soon. Stay healthy, wealthy and wise. If you want more details, contact to Permutation Coaching Institute on mobile number 9927206065 or 9927310911. Thanks for watching.